I, Zubin Mishra, the Program Coordinator and Consultant for the Bharati Initiative, extend a warm welcome to all of you here. And I see we have a large crowd, so it's very encouraging for us to see a large crowd here. And along with that, I would also like to welcome our guests who have joined us online. There are several of us who have not been able to come to Delhi to attend, but I know they are present to wish us for this great occasion that we have today. And thank you for joining online also. So we are gathered here for a very, very special reason, the launch of the application process of the APEDA's Bharati initiative. It's a landmark initiative for Bharati, and Bharati Export Acceleration Initiative is going to be a game changer for agri-food industry. Bharati, which stands for Bharat's Hub for Agri-Tech Resilience and Advancement and Incubation for Export Innovation, has been conceptualized as a first-of-its-kind platform to nurture, mentor, and accelerate startups that are driving innovation in agri-food sector and the agri-food ecosystem, with a sharp focus on exports. As APEDA sets its sight on the 50 billion agri-food export milestone for itself by 2030, we believe Bharati will be a catalyst to help our agri-food producers, startups, exporters, and innovators to move from farm to global markets. That's the ambition that we nurture. To formally inaugurate today's proceeding, it is my privilege to invite Sri Abhishek Dev, Chairman APEDA, to deliver his opening remark. Sir, the stage is yours. So, my very heartfelt thanks to Zubinji and also all the distinguished panelists and guests who have come today, especially Mr. Ritesh Malik and Tanveer ji and other colleagues who will be joining us very shortly. So we were just having a lot of interaction throughout the day on how to ensure that the quality of the food products, the quality of our exports is maintained, how we can increase our exports. India, as we all know, is a very big producer of agricultural products. In fact, in terms of horticultural products, we are the second largest. We are the largest producer of milk, largest producer of oil seeds, of pulses, and many other commodities. But if you see our share in the world agri exports, though the share is rising, but the share is only around 2.4% as on date. And we have a rank of 7th in the world agri exports. So there is a lot of untapped potential in terms of increasing our exports. And one of the initiatives which we thought from the side of APEDA as an export promotion body for the agricultural and processed food products was to look at how we can take measures, look at innovative products, look at technologies, look at new solutions to ensure that the products are exported in better manner, the quality is preserved. We all know that India is a very diverse country. Many of the producing regions are very far away from the actual places of transportation. So there is a lot of issues in spoilage, in ensuring that the shelf life of the product is protected. So we were having, I was having a discussion with Tamanna ji, who is the head in the Global Trade Promotion Organization in Commerce. And we were thinking on how we can look at innovative solutions to push our exports. So she suggested me a very good idea to have a initiative to target and identify these startups in the agri sector, because startups, as we all know, have the best ideas, they have fresh thinking. When we start working in established manner with the government departments, the governmental structures, we tend to get very fixed in our approach and we, in a way, have fossilized thinking. So to move out of this chain and to unshackle this, we thought that taking the support of startups will be the best way forward, and that is why we have come up with this Bharati initiative.
initially we thought that when we started this, we thought that we will start in a small way. We will support around 25 startups. But then, of course, after that, with discussions at the higher levels, we scaled up the initiative to 100 plus startups. Uh, Friends, as we all know that even this 100 number you must be thinking is a very small number considering the number of startups which are working in this agri space. If we look at DPIT data, there are around 9,000 plus startups which are involved in this food sector. So it is a start. We look at how it progresses, but I'm sure that this is with this initiative, more of the youth and more of the young entrepreneurs will get associated with the government, will get associated with us, and will help us better design the products, better design the packaging to ensure that we are able to export more to the world. So my thanks to all of you who has joined today, and especially my apologies in terms of the. I think we are having a challenge in terms of seating everyone. So my apologies for that. But I hope the our enriching discussion will make up in a way, and um, uh, I leave it the house open to Zubinji to take it forward. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for your inspiring word and for setting the vision for Bharti and also setting the agenda for today's evening. To mark this launch of our entire application process, because today we go live with the application process to seek nominations and applications for people in the startup ecosystem who we want to accelerate further. So to mark this occasion, we have planned for a panel discussion so that we can have leading lights shed their perspective on a very important agenda. So the theme for panel discussion today is from farm to global market, the Viksit Bharat ambition, and how a startup-driven innovation can power India's agri-food export surge and make India a pioneer for the future. We will have Dr. Sudhanshu, Secretary APEDA, to moderate this session. And I would take this opportunity to invite our respected panelists to join us. I would request Professor Dr. Tanveer Alam, Director in Institute of Packaging. Dr. Alam, please join us on the stage. Dr. Ritesh Malik, Founder, Innovate, Angel Investor, Philanthropist. Dr. Malik, please take the stage. Shri Ashish Pandey, Innovation Lead for Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Ashish ji, please. May I now request Dr. Tamanna Chaturvedi, Vice President and Head G2PO. We are awaiting two of our panelists. I guess they are stuck and they should be joining shortly. But nonetheless, I would request Dr. Sudhanshu to start the proceeding. Dr. Sudhanshu, sir, if you could come here and we can start by welcoming our guest with a bouquet. So can I have the bouquets to be... Dr. Sudhanshu, I would now request you to start the moderation. Thank you, Juvanji. Good evening, everyone. It's really a proud moment. The day we have conceptualized and seeded this idea under the esteemed, the able guidance of our Chairman APEDA. And we have been closely working, Juvanji, the program coordinator, Dr. Tamanna Chaturvedi, and we finally thought the day will come when we will start the whole process. Chairman APEDA has already given a good background of this concept, how this has emerged, considering the challenges in the supply chain of production and exports.
why there is a need for facilitating the or grooming the startups for connecting to the supply chain of exports. So with this, I have been given the responsibility for moderating this session, and the wonderful esteemed panelists are there who will be able to throw light how this can be further nurtured, this whole idea. So with this, the first the question I would like to throw to Dr. Tamanna Chaturvedi from GTPO, Global Trade Promotion Organization, and who has contributed in the conceptualizing the whole idea. So Dr. Tamanna, from your vantage point at GTPO, you must be seeing the global trade landscape evolving quickly, rapidly, with growing emphasis on compliance, sustainability, and shifting consumer preferences. What do you feel that how these startups align with these evolving norms and consumer demands, and what structured trade intelligence and market access support are most critical for them? I think you are the right professional who can contribute and who can respond to this question. Dr. Tamanna, please. Sure, thank you, Dr. Sudhanshu. So, I think the way APEDA has structured Bharati, and I'll speak in a very simple language, कि ये भारती है क्या? So, finally what we happen is that all of us are aware India is one of the largest producer. But if you can point out 3 main problems कि export बढ़ क्यों नहीं रहा है. Number 1 is, आज की तारीख में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर अपीडा की हेल्प से हम उसको रोड शो में लेके जाते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि स्टॉल पे मेरे बाहर आया नहीं आया, जो कि हम वर्ल्ड फूड इंडिया में भी कर रहे हैं. सो अंडर द गाइडेंस ऑफ चेयरमैन अपीडा एंड द सीनियर ऑफिशियल्स, वी रियलाइज़ कि क्यों ना इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, दैट इंस्टेड ऑफ हम बना के इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाए, वाई डोंट वी क्रिएट अ मार्केट इंटेलिजेंस फर्स्ट, कि यूरोप को क्या चाहिए, जापान को ऐसा क्या चाहिए, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ है, दुबई के साथ है, तो हम पहले उन मार्केट को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर उनसे बोलेंगे ये मेरा फार्मर है, तुमको जो प्रोड्यूस करना है कर लो. क्योंकि जब हम कुछ बना के आपके पास लेके जाते हैं तो आप बोलते हो इसमें पैकेजिंग ठीक नहीं है, इसमें आपका पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है. सो वाई डोंट यू कम बैक टू इंडिया, हैंड होल्ड माई फार्मर्स, हैंड होल्ड माई स्टार्टअप्स. क्योंकि फार्मर्स इतना प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होता है, तो स्टार्टअप का इसमें एक रोल हो जाता है जो कि एक प्रोफेशनल टच लेकर आएगा इस पूरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस में. तो 1 इज़ दैट प्रॉब्लम दैट वी आर डूइंग, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, गिविंग आइडियाज़ टू द स्टार्टअप, ये बनाओ तो इंटरनेशनल मार्केट में. अब ट्रेंड क्या चल रहा है, देयर इज़ 5 ट्रेंड्स जो कि स्टार्टअप्स को समझने चाहिए. नंबर 1 ट्रेंड जो कि चल रहा है, दैट इज़ पीपल आर नाउ बॉदर्ड, कोविड के बाद और भी ज़्यादा है, ऑन द हेल्थ ग्राउंड. लाइक जापान हैज़ कम आउट विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फोशू, कि पूरा एनीथिंग दैट इज़ फंक्शनल, चाहे आप उसको कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दीजिए. और ब्यूटी ऑफ इट इज़, चाहे मैं पोमीग्रेनेट बेचूँ चाहे ग्रेप बेचूँ, आई हैव अ हेल्थ बेनिफिट अटैच टू माई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. सो वो नैरेटिव क्या होना चाहिए, जिस कंट्री में कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो मैं ऐसी चीज़ बेचूँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए. रशिया में अगर कूल कंट्री है तो ऐसी चीज़ बेचूं जो सत्तू का आटा हो सकता है, जो कि जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, उसके नूडल्स क्या बेच सकता हूँ. सो कहाँ क्या निकालना है is something that Bharati will bring very beautifully to the public, and that is one contribution of APEDA through this startup cell. Second problem जो export में आती है, that is that are we, even in apples, even in grapes, even in traditional products, we are trying to look forward for giving it a technology intervention. जैसे अगर मैं मुजफ्फरपुर से लीची उठाता हूँ और यूके मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर मैं सल्फ़र ऐड कर देता हूँ तो ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो नहीं ऐड करता हूँ तो वहाँ तक पहुँचता नहीं है, ऐड करता हूँ तो दाग धब्बे आ जाते हैं. कोई स्टार्टअप ऐसा सोल्यूशन दे सकता है जो दोनों चीज़ को सॉल्व कर दे. इट कुड बी एन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, इट कुड बी एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट. तो स्टार्टअप्स को ये समझना पड़ेगा दैट कल तक मैं जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बेचता था, अगर आज वही प्रोडक्ट मुझे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो क्या वही प्रोडक्ट एज इट इज़ लुलु मॉल में बिक जाएगा? वही प्रोडक्ट क्या यूरोप का बायर खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट बोलता है 30, बट यूरोप बोलता है 4, जापान बोलता है 10, यूएस बोलता है 15, कीनिया तक बोलता है 15 और 20.
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे मॉड्यूलेट कैसे करना है टू सेल इन दी डोमेस्टिक मार्केट वर्सेस सेलिंग इन दी। ये भारती का अपना एक बहुत अच्छा मार्केट इंटेलिजेंस होगा, जिसमें हम आपको इंपोर्ट रेगुलेशंस किस मार्केट में क्या है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। प्लस अब आपने, प्रधानमंत्री ने आपका मखाना बोर्ड बना दिया है, तो हम क्या मखाने को मखाने की तरह करें या मखाने का पास्ता बना दें, मखाने का नूडल्स बना दें? तो what are the innovative products that are coming out? That is another high value products that we are trying to work out. Then there is international market is wanting a concept of novel food, super food. किनुआ बेच सकते हैं, चिया सीड निकाल सकते हैं। लैटिन अमेरिका में इतनी सुपर फूड की डिमांड है दैट हम बेचते बेचते थक जाएंगे। इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग द अवेयरनेस। सो डॉक्टर सुधांशु, टू आंसर योर क्वेश्चन इज, स्टार्टअप को इंपोर्ट रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड बहुत चल रहा है कि इंडिया और थाई, इंडो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें 10 कंट्रीज आती हैं, तो क्या मैं इंडिया और थाईलैंड का कोई फ्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ स्टार्टअप में? सो मैं SPS TBT इशू कर सकता हूँ, क्या मैं कोई ब्राज़ील जाने के लिए कोई पैकेजिंग नॉर्म्स डेवलप कर सकता हूँ, सी प्रोटोकॉल डेवलप कर सकता हूँ? स्काई इज अ लिमिट अंडर भारती। सो वी विल अप्रिशिएट एज अ भारती टीम दैट आप लोग चावल बेचने के लिए हमारे पास मत आइएगा। वी विल वांट सर्टेनली ब्यूटिफुल न्यू आइडियाज फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, एक वो कैटेगरी है। अगर कोई एग्जिस्टिंग चैलेंज हम फेस कर रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन हो गया, मैंगो का प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम अगर मुझे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे सकता है, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ है, कोई टेक्नोलॉजी है कि पैकेजिंग सोल्यूशन है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रक नहीं मिल रहा है, पोर्ट के ऊपर इफिशिएंसी बढ़ानी है क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट्स को वी विल बी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर भारती विल डू एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Tamanna, for highlighting the overall importance why this initiative is required and how this initiative can help in grooming, facilitating the startups for reaching to the ultimate objective and for enabling to export to reach to heights. So thank you very much, and now I'm coming to Dr. Tanveer Alam, who is the Additional Director of Indian Institute of Packaging. You might all be knowing about that Indian Institute of Packaging is one of the premier institute of Government of India and the Ministry of Commerce and Industry. And packaging, we all know that it plays a crucial role. So Professor Alam, I will come to you that we all know that packaging is a vital element in the supply chain of exports. And whatever measures have been taken for making a safe product, unless the packaging is good, it is not going to reach to the consumer in a proper shape, or just improving the shelf life of the perishable products. So you may highlight how Indian Institute of Packaging can contribute in this initiative of APEDA, Ministry of Commerce, for enabling our startups to get the safe product reached to our target markets and finally the international consumers. Professor Alam. Okay, thank you. It is always what I can say, it's my pleasure when APEDA is inviting Indian Institute of Packaging. I think so. APEDA is the second home for Indian Institute of Packaging. The way we are working very closely with the APEDA for decades and decades now, it becomes so active now these days. And I'm happy to share that in recent time, the importance of GI and organic product, and APEDA has assigned to Indian Institute of Packaging. So far we have developed 16 export packaging standard and specification, and again the mantra, 3 mantra we have based on 3 mantra. One is innovative packaging, another was the sustainability, and third mantra of this packaging specification standards we have developed is the digitalization of the packaging. Now this is the new horizon and that. And I'm happy to share all of you 4 area of new activities we have started. We started from Indian Institute of Packaging Delhi Center. One is artificial intelligence and machine learning. And second was life cycle analysis. When you export your product, now the exporting countries is asking, what is the carbon footprint of your packaging material along with the food? So now that facility we have also started, because all you are from ecosystem of a startup. And third area of packaging design. So now when we are getting the interaction and call for the
startup people, they are always asking, we need to have a good packaging design. And that first time at Indian Institute of Packaging, we are in final stage to establish packaging design studio, so that any startup connect directly or even via the APEDA, we are ready to give the solution from all sort of the solution, from designing of the packaging material, labeling, and also how we also guide the compliances of your exporting countries. And fourth important area, every day we are talking about that, the answer for sustainability is, major answer is biodegradable and compostable. At IIP Delhi, we have created a facility so that you can analyze and evaluate and get tested your packaging material is how much biodegradable and compostable. So I thought this is the area. And fourth, recently, first time, although our figure is very less compared to the overall ecosystem of the country's startup, now at IIP we have started startup incubation and startup center in the field of the packaging. 7 people within 1 month they have joined at a startup, and area is again what I have highlighted. And one startup is working on the biodegradable and compostable film at commercial level. Now they are a second level startup, and they are making the film, biodegradable and compostable film, utilization of natural fiber materials and commercially, and we are supporting to evaluate how much this biodegradable compostable material will be suitable to pack a particle fruits and vegetable, both domestic and international market. That support we are giving to them, and you also, I request to all of you, you can come to the IP. You need all, whether for the domestic market and for exporting market, you need good packaging. And when we talk about the good packaging, 2 aspects is very much important. One is the engineering and functional design of the packaging, another is aesthetic design. So that to make your attractive, aesthetically good design, we have established the packaging design studio to will help you to have a good packaging design. And the keeping in mind the how, now madam has highlighted, there is huge demand for functional food now these days. And we are talking about that. We are thinking, world is thinking how the food will make healthier, and the functional pharmaceutical foods will be a preventive and curative mechanism. There is need to highlight good, through the design and good graphics, if our product is functionally good, good for cholesterol, good for heart, good for anti-cancer properties, we need to highlight based on the scientific data and nutritional value, okay, this is omega-3 fatty acid and functional food. So packaging is very much important, and we are ready to give the all solution, and we are closely working, and some of the already these standards we are on behalf of APEDA, we have already made ready for sir. Sir, we are self-sustaining institute, sir. That I need your support. Thank you very much, sir. Thank you very much, Professor Alam, for explaining the importance of packaging. We all know, and how Indian Institute of Packaging is going to contribute in this initiative. And would like to just inform the august audience that APEDA is closely working with the Indian Institute of Packaging for GI packaging standards. Professor Alam's team only developed very good packaging boxes which they have displayed. They are having a stall here in WFI. I will urge the startups to go and see the kind of packaging they have developed. And with the permission of the chair, I would like to just inform that we have Chairman APEDA has taken a decision to start a course with the Indian Institute of Packaging, which we will be announcing shortly formally. This will be a course basically where the new entrepreneurs and the processors can be guided and facilitated and trained about the development of packaging and the importance of packaging. So thank you very much, Professor Alam. Now coming to one of the important panelists in this session, Dr. Ritesh Malik. All the panelists are important, but Dr. Ritesh Malik represent the founder Innovate, and we all understand about why because how important he is. We all know in the journey of the startup how investors are, how crucial the investors are. So Dr. Ritesh is an entrepreneur and investor.
So from investors' perspective, what makes an export-focused agri-food startup fundable, and what support mechanism can unlock more venture capital into the sector? Because we are of the opinion, after grooming and facilitating the startups, finally, in this journey, under this initiative, we have to connect to the global investors. So how this initiative can help in basically connecting these nurtured startups who will be qualified to connecting to the investors. No, Dr. first Malik. of all, thank you very much, Sudhanshu sir. Thank you very much, Chairman sir, for inviting me. Very excited to be here. I think one of the most important things for Startup Bharat, which our Prime Minister launched in 2016, is the fact that we are an agrarian nation. Globally, 1 out of 3 people are directly employed by agriculture. And unfortunately, for the past decade, we have not seen agricultural startups coming from India. I think APEDA has taken a phenomenal step to actually nurture and develop capacity building in getting agriculture plus innovation to the forefront of creating startups. So very grateful for the support. I think जिस देश की 1/3 इकोनॉमी चलती हो एग्रीकल्चर से, and the sad part is, while 1/3 people get employed by agriculture, it is still the 3rd largest economy only. If you see, it's just a $4.25 trillion economy. Fintech and real estate are way higher. So the idea is there is a lot of opportunity to add technology layer. And while people talk about export focused technology layers, I think agricultural technologies are way higher than that. From transportation to seeding to developing ideas, as Alam sir is working really hard on packaging, sustainable packaging. I'll give you a very interesting example. Our university in Mohali called Plaksha just signed a contract with the Punjab government, and we are giving them satellite data and actually guiding them कि कौन सी धरती पे कौन सा पौधा लगाना चाहिए. I think agriculture is all about data. Sadly, for the past 7 decades, our country is actually throwing darts without knowing where the dartboard is. If we get the right intel, as ma'am rightly mentioned, intelligence is the most critical layer of agriculture. We can easily become one of the most valuable exporters in the world. Sadly, today, while we do export a lot, Sudhanshu sir, the challenge is that our exports are actually one of the smallest if you talk about per square kilometer productivity that we build. So I think the mission at Bharti is a very pious one, and it is no longer a charity mission. अभी तक क्या होता था, entrepreneurs used to think यार agriculture है, इसमें पैसा नहीं बनेगा. You talk about my friends at Dehat built a unicorn venture. You talk about my friends building HFN in Chandigarh. They are about to become a unicorn. I think one of the largest opportunities, untamed opportunities. This is the time. जब वो 2010-11 e-commerce, fintech और इन सब के लिए था, 2025 will be the time for agri-tech. And it is not a charity case. It is a case wherein if we develop technologies to support our farmers with the mission that farmers should become the richest in that particular area, we will develop capacities. We are very grateful to have one of the torch bearers of Startup Bharat, Sanjeev sir. Sanjeev sir has been supporting startups in ways unimaginable. So continuing in my comments, Sudhanshu sir, I think this is a huge opportunity. From satellite, I'll give you a very interesting example. For as low as $25, you can get 25 square kilometers of satellite data, and people with AI and machine learning can actually tell you which soil is good for what. This single intelligence can save farmers 4 to 5 months of poor crop productivity. So I think opportunities are massive. I welcome all startups, and we will also take it up at Innovate across our campuses, motivate our startup founders to not just focus on the sexy sectors of Startup Bharat, which are कि आप है ना Zomato बना लो, Swiggy. While these are great, the idea is we need to build Startup Bharat, and that should be led by R&D.
the biggest challenge with India today is only 0.45% of GDP goes to R&D. We need to take it up to at least 2 to 3%. We have to compete. If we have to compete with Asian tigers like Taiwan, Singapore, South Korea, R&D needs to be the cornerstone of everything. I tell this to a lot of startup founders I meet. I said, don't look at what you earned this quarter. Spend 5% of your revenues on R&D. R&D will ensure that we as Bharat are not dependent on South Korea. We as Bharat are not dependent on China. We as Bharat are not dependent on other countries. Unfortunately, today, we don't have even an actuator machine in a production assembly line in India. How do we develop robotics? We are talking about building a digital Bharat. For that, we need R&D. So my request to everyone is develop R&D, and for a Viksit Bharat, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, ensuring technology-led production happens, and under the able leadership of Chairman APEDA, I would urge all my startup founder friends to actually build agri-tech startups, and out of the 250 unicorn startups that we visualize by 2029, 2030, at least 30 should be agriculture-based startups. Thank you very much, sir. Thank you very much, Dr. Malik. I think you have really charged the startups who are not only physically in this room, but large number of startups who are connected in the hybrid mode. And you have really charged, and the crux which you have told about, I think under this initiative we will be focusing on that so that the ultimate objective gets fulfilled. So thank you very much. And I would like to just thank Sanjeev sir, just to welcome with a bouquet of. So the next panelist is from an important organization we all know, which is Atal Innovation Mission under Niti Aayog, and Mr. Ashish Pandey, who is the innovation lead. And those in the startup ecosystem, they know very well about the role played by Atal, this incubation mission. So Mr. Ashish, we would like to just ask that how AIM has been a catalyst for a startup innovation across the country, and how this AIM can support and accelerate export-oriented innovations from food startup, especially under the initiative which we have taken in this Bharati. Thank you, sir. Thank you for the question. First of all, I would like to congratulate the whole APEDA team for launching Bharati portal. And I think any platform which gives a direction to the startups in terms of regulations, in terms of how to get these regulations done, how to export their product is the need of the hour, and I'm sure Bharati will have huge success. Now, talking about Atal Innovation Mission, sir, we launched in 2016 and 17, and we were given a huge mandate of, to foster innovation across the country. That's a huge mandate, right? Back 11 years back, there were only 300, 400 incubation centers. School innovation was almost nil, right? हम लोग बस chemistry, physics labs में ही, we used to do the rote learning and all. Now we designed few programs which, cater to innovation at each level of development. For example, in school innovation, we created a program called Atal Tinkering Labs. Now we have 10,000 labs, and we are expanding to 50,000 more. These labs are situated in schools, small maker spaces with DIY kits where students go and tinker around, right? And then we thought of democratizing incubation centers as well. Back in before 2014, we had only 300, 400 incubation centers, and that too in premier institutions. Now there are almost 1,200 incubation centers across the country, and it has created a huge institutional mechanism to support early stage startups. Out of these 1,200 incubation centers, we have like 150 incubation centers funded by us. But now, as I lead in my team, I lead the incubation center team, and I visit incubation centers every month, right? And what gap we realized is
What about the startups which are already at TRL 4 and 5 level? What is the next phase for them? We have created an institutional mechanism for early stage startups. What is next? For example, in food technologies, how can a startup export to various countries? And I must tell you, there is a huge demand for it. We launched a rice accelerator program with Australia, and we saw that happening in our accelerator program. We did it with CSIRO, a national science agency in Australia, and we exchanged startups. There is already technology transfer agreements happening in Australia and vice versa in India. So now the next phase of incubation or innovation as such is how to involve industry players in this. As a mandate, we have got a mandate to create industrial accelerator across the country. We want to create 15 to 20 industrial accelerators in various sectors. And here comes the role of APEDA and AIM, right? Sir, you asked how can AIM support APEDA? I think the question should be how can AIM and APEDA support each other? I would invite, this is the right opportunity for me to invite APEDA to come with us, partner with us, and we can involve industry players, big industry players in food technology, and help out our TRL 4-5 level food-based startups across the country. So this is all I have to say. Thank you, sir. Thank you very much, Ashish ji, and thanks for your offer for collaborating between the two organizations, this Atal Incubation and APEDA, and very in an interesting manner you have just explained the journey of these incubators and the process of incubation and this innovation. So definitely we will collaborate, and this collaboration will definitely help in taking Bharati to new heights. So thank you very much. Now I would like to our esteemed panelist, Shri Sajeev ji, Joint Secretary, DPIIT. And we all know, and Mr. Malik has already mentioned about the kind of the torch bearer for the startup ecosystem. So sir, from the policy perspective, what key interventions and ecosystem enablers are being prioritized to help startups, especially early stage agri-food ventures overcome initial growth hurdles, become scale ready and reduce the high risk of mortality. Because you have a vast experience and the kind of overall system under the DPIIT has been made. So sir, we would like to have your guidance and how the DPIIT can support the cause and the purpose of Bharati in taking it to its final the required level where Bharati has to reach. धन्यवाद सर। और पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा, मैं उस परिस्थिति के बारे में बताना चाहूँगा जिसके थ्रू मैं आज यहाँ पहुँचा और कैसे मैं खेती से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और एक और बात करना चाहूँगा कि टॉर्च बियरर मैं नहीं हूँ, टॉर्च बियरर रितेश सर हैं, और यहाँ जो उपस्थित स्टार्टअप्स हैं वो सारे टॉर्च बियरर्स हैं। हम लोग बस फैसिलिटेटर और इनेबलर हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का रोल इसमें आता है कि हम जो भी स्टार्टअप है उसको फैसिलिटेट कर सके। और रितेश जी के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि ही इज़ प्रोबली वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स जिनकी मैं सारी रील फॉलो करता हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगा कि वो देखें, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टअप लाइफ लेसन्स उसमें इतने अच्छे होते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्पेशली whatever he says on various issues, I share it with them. I think he deserves a big round of applause. And coming back to agriculture and agriculture related products, मैं जब पढ़ाई में बहुत अच्छा था नहीं, किसी तरह से मैट्रिक में जो 10th होता है मेरे 2nd डिवीज़न आए थे। और उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, खेती कराऊंगा। तो 2 साल 12th किया और उसमें ठीक ठाक नंबर आए, बट मैंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ के चला गया गांव में खेती कराने। फिर वहाँ जाके पता लगा कि दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई है और सबसे मुश्किल काम है खेती। ये नहीं, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ
इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। जो एक होता है, आज सपोज हमारे धान की बुआई करनी है, गांव में 25 ही लेबर हैं। पहले मैकेनिकल व्यवस्था नहीं थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे, वो प्लांटर्स नहीं थे, तो हर किसी को उसी दिन लेबर चाहिए, और उस दिन अगर नहीं मिला तो आप बैठे रह जाइएगा। तो एज लक वुड हैव इट, आई गॉट probably disenchanted not from agriculture but getting agriculture done at my village, and I came back to Delhi, and after that जैसे जैसे एक धारा प्रवाह में शामिल होके आज इस जगह पर पहुँचे। बीच में मैंने, आज नियाम की मैडम नहीं है, मैंने वहाँ भी कोशिश किया था पर वहाँ डेपुटेशन ही नहीं मिला। मैं जयपुर में पोस्टेड था और जयपुर में ही है नियाम, तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। फिर बीच बीच में मुझे आते रहता है। आज भी मैं काफ़ी खेती गृहस्थी से जुड़ा हुआ हूँ, और आई थिंक आई हैव मोर देन 75 टाइप्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स इन माय फार्म। तो मैं इस इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक समझता हूँ। और आज के दिन में अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में करीब 20% जो स्टार्टअप्स हैं वो एग्रो टेक और रिलेटेड चीज़ों में हैं, पर उसमें से स्केल सबका बहुत कम है। और बहुत सारे जो अपने स्टार्टअप्स हैं वो दे आर मोर इनटू पैकेजिंग एंड नॉट एक्चुअली प्रोसेसिंग, और जो उसको वैल्यू एडिशन नहीं है। स्पेशली मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ मैंने देखे कई, मैं अभी गया था पटना में, वहाँ सारे स्टार्टअप से मिल के आया। मोस्ट ऑफ देम आर इन पैकिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज, बट वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। हम अपने एग्रीटेक में हमारे कई स्टार्टअप्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारी कंडीशन है, जैसे हमारी लैंड होल्डिंग कम है, हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन कम है, और जैसा अभी सर भी जो डिस्कस कर रहे थे, हमारे स्टार्टअप्स बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आए हैं। जैसे कई स्टार्टअप हैं जो आपके फसल को देख के ये बताने में सक्षम हैं कि ये जो आपकी प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी क्या है, ये कितने दिन तक रह पाएगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट सबसे जो है कि ज़मीन का एनालिसिस करके, सॉइल एनालिसिस करके ये बता सके कि किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है और कैसे फसल को बढ़ाई जा सकती है। हमारे पास यूनिकॉर्न अगर बोला जाए तो देहात टाइप के हैं, पर वो भी एग्रीगेटर हैं। और साथ में एक और चीज़ में देखने में आया, जो हमने डेटा एनालिसिस किया तो उससे निकल के आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन 2 states, one is Maharashtra and Karnataka, whereas there is immense possibility and probably मैं अभी देख रहा था ये अरुणाचल का ऑरेंज है, तो अरुणाचल में स्टार्टअप को क्रिएट करने में हम लोग को इतना अभी दिक्कत हुआ। ये भी एक सर पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझने की बात है। हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत के हर गांव में एक स्टार्टअप होना चाहिए, पर हर गांव में स्टार्टअप होने से पहले हर जिले में होना चाहिए। और आज अब शायद एक आध महीना के अंदर सारे जिलों में स्टार्टअप्स हो पाएंगे, एंड इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। हम लोगों ने कितने पापड़ बेले जो हम ही जानते हैं, बट फैक्ट यही है कि आज भी कई जगहों पर, एंड लेट अस एडमिट आवर शॉर्टकमिंग्स, दैट इज वेयर वी कैन इम्प्रूव। और जैसा सर आपने पूछा कि स्टार्टअप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्टार्टअप में पहला जो स्टार्टअप को ज़रूरत होता है वो है उनको फिनेंशियल हेल्प की। और उस फिनेंशियल हेल्प के लिए हमारी स्टार्टअप इंडिया की 3 स्कीमें चलती हैं। पहला है सीड फंड, जो जब स्टार्टअप कंसेप्चुअलाइज होता है उस समय उसके मदद करने के लिए है, और दूसरा है फंड ऑफ फंड, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सिडबी के थ्रू, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और तीसरा क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसका मैं कहूँगा कि स्टार्टअप्स जो स्पेशली एग्रीटेक और एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं उनको कई बार वर्किंग कैपिटल की काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी अभी हम लोग अगले महीने
एक मेला टाइप का लगाएंगे। तो अगर कोई भी स्टार्टअप लोन लेना चाहता है तो हमारी टीम भी यहाँ आई हुई है, उनसे कनेक्ट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि कोलैटरल बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि और दूसरा इंटरेस्ट रेट भी करीब 9 से 10% का है। प्रोबेबली बाकी जगह हो सकता है कई, देयर आर मल्टीपल स्कीम्स, बट हमारे स्कीम में ये है। और अगर आप लोग उस लोन का फ़ायदा उठाना चाहें तो अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ एक बड़ा सा शिविर लगाएंगे जिसमें सारे बैंक्स को बुलाएंगे। और सर रितेश सर, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपके कनेक्ट में बहुत सारे स्टार्टअप हैं। विडंबना ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि फंड्स अवेलेबल नहीं है, कोई हमको देता नहीं, और आज हम देने के लिए तैयार हैं तो स्टार्टअप नहीं आ रहे हैं। प्रोबेबली वी लैक दैट मैकेनिज्म वेयर वी कैन वी आर इन डायरेक्ट कनेक्ट विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसलिए मुझे तो जहाँ भी मौका मिलता है मैं जाके जो प्रश्न के बाहर की भी थोड़ी बातें कर लेता हूँ। और उसी तरह जो अपने स्टार्टअप्स हैं उनको दो और बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। एक स्टार्टअप के लिए पेटेंट का रनवे है, जिसमें अगर आप पेटेंट कराना चाहते हैं, आज के दिन अगर आप कोई एग्रीटेक हैं तो आपकी अपनी एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है या कोई आपका आईओटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है, तो उसके पेटेंट कराने में हम लोग आपको सुविधा प्रदान करते हैं। और उसी तरह जिम में भी स्टार्टअप्स के लिए एक स्पेशल रनवे है जिसमें आपको इजीली आपका नामांकन हो जाता है और आपको सुविधाएं दी जाती है। और इसके साथ साथ मैं अभिषेक सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जैसे अमेजन वाले हमारे पास, मैं इंसिडेंटली ई कॉमर्स भी देखता हूं, तो अमेजन फ्लिपकार्ट में भी अगर आप कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्टार्टअप्स को अगर उनके लिए कोई उत्सव करना हो या कोई एक अलग से एक लैंडिंग पॉइंट बना दें जिससे अगर करना चाहें तो, क्योंकि हमारे पास 2 लाख स्टार्टअप्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लुक आफ्टर इंडिविजुअल सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर मेरे को पर्सनल पसंद है तो मैं देखता हूँ, बट कहीं ना कहीं जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर लेके आएँ तो हम लोग के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 24/7 आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारी टीम में अधिकतर बच्चे जो हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वो सब सैलरी कट लेके यहाँ आए हैं इसलिए कि देश का सेवा कर सकें। तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार का अगर ज़रूरत पड़े तो वी आर देयर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समझ से जब हम लोग एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की अगर बात करें, आपने बड़ी सरल भाषा में गांव, किसानी और देहात से जोड़ा है कि जब तक हम जमीनी उसमें अगर नहीं वो, और मुझे बड़ा खुशी है कि एट द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन डीपीआईटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप अभी भी उन सब जमीन से जुड़े हुए हैं। जब आप कहते हैं इस गर्व से, फक्र से कि अभी भी मैं किसानी से जुड़ा हूँ, तो जो जुड़ा हो सकता है वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ सकता है। और सर आपने बहुत सही कहा कि विडंबना है कि भारत सरकार के तहत एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, फंड हैं लेकिन फंड लेने वाले नहीं हैं, तो दैट मीन्स देयर इज अ गैप। और आई थिंक अंडर दिस भारती इनिशिएटिव वी कैन डेफिनेटली try to plug in this gap for connecting the right kind of agri startups for availing the funds and the benefits. So thank you very much all the esteemed panelists for making this a wonderful session. And I have just jotted down some points. So before concluding, sir, I would like, sir, would you like to conclude that, or after this we can? थैंक यू सुधांशु जी। और मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, हमारे स्टीम पैनलिस्ट संजीव सर और रितेश जी, तनवीर जी और पांडे जी, तमन्ना। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। हालांकि मुझे लग रहा है समय हमारे पास कम था, बट एटलीस्ट हमने स्टार्टिंग करी। एक खुशखबरी मैं आपको और भी देना चाहता हूँ, कल हमारी लुलु ग्रुप के साथ एक MOU भी हुआ है। तो जो भी हमारे भारतीय के 5 स्टार्टअप्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट गल्फ फूड में एग्जिबिट कराएंगे उनके प्रोडक्ट्स को। And they will bear all your transportation charges, everything. So
वो लुलु ग्रुप करेगा, हम लोग भी अपनी तरफ से 5 को और करेंगे। गल्फ फूड नहीं तो ऑर्गेनिक वाला, अगर हमारे पास इफ़ वी गेट सफिशिएंट ऑर्गेनिक स्टार्टअप्स, तो बायोफैक में हम लोग जो न्यूरमबर्ग में होता है, वी आर द पार्टनर कंट्री, उसमें अपीडा अपनी कॉस्ट पे 5 स्टार्टअप्स को लेकर जाएगा, हुएवर गेट सिलेक्टेड। तो लेट अस होप वी गेट गुड स्टार्टअप्स क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि बताया गया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट कई चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी से भी आप सड़क पे पूछ लें कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो, अगर कौन सा फल है जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे आम। बट हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आम के, लेकिन एक्सपोर्ट्स में हम लोग अभी 6 या 7वें नंबर पे ही हैं, क्योंकि जो हमारे आम हैं टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आप बाय सी एक्सपोर्ट करने की अभी तक हम तकनीक नहीं ईजाद कर पाए हैं। तो आई एम होपिंग विद दिस इनिशिएटिव वी विल बी एबल टू हैव सम इनोवेटिव मेथड कि हम जो हमारे मैंगोज़ हैं उनकी एक सेफ़ मैनर में एक शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएँ ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। इसी तरह बनाना भी वर्ल्ड में करीब 15 बिलियन का $US का ट्रेड होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास। आज की डेट में बनाना हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है फ्रूट्स में, बट अभी भी जो हमारा एक्सपोर्ट फिगर 400 मिलियन का है। तो बनाना एक्सपोर्ट करने की भी बहुत संभावना है। रशिया एक मार्केट है, 1 बिलियन का उसका इंपोर्ट है बनाना का, और वहाँ पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि आपकी जो क्वालिटी का बनाना जा सकता है, बट कैसे उसको भेजें आप। इक्वेडोर से रशिया जाता है बनाना शिप में, हमारा जो रशिया तक का डिस्टेंस है उससे भी कम है, बट हम लोग शिप से उसको भेज नहीं पा रहे हैं। इसी तरह और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो कि जो हम सोच रहे हैं कि इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग डेवलप कर पाएँ। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि हम लोग जब ये भारती का अभी ये हम लोग शुरू करेंगे इनिशिएटिव और आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वी विल बी एबल टू सॉल्व मेनी ऑफ दीज इश्यूज़। एंड हालांकि हमारा जो टारगेट है 100 का है, बट इसका ये मतलब नहीं है, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग अपना जो भी एग्री बिजनेस कर रहे हैं, एग्री एक्सपोर्ट में वेंचर करना चाहते हैं, हम पूरी उनकी हैंड होल्डिंग करें, पूरा सपोर्ट करें, ताकि आगे अगले साल वो लोग और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। और ना सिर्फ एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक मार्केट में भी आप उसको अच्छी तरह से आप उसको डिस्प्ले करें, सेल करें। डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन, जितने भी आज पैनलिस्ट हैं सब लोग आ जाए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि कई लोगों को खड़े रहकर आपको ये सेशन अटेंड करना पड़ा। जब भी हम नेक्स्ट ये इनिशिएटिव करेंगे तो हम लोग जो वाणिज्य भवन में सर की छत्र छाया में करेंगे। तो सर पूछे थे कि आप कर रहे हैं तो इसमें आप लोग स्टार्टअप इंडिया को कुछ फंड्स दे सकते हैं। मैंने कहा हम तो आपसे फंड्स मांग रहे हैं। तो अल्टीमेटली रितेश जी को ही फंड सपोर्ट करनी पड़ेगी हमें लग रहा है, बट डेफिनेटली माय बेस्ट विशेस एंड थैंक्स टू एवरीवन। मैं एक और अगर आप अनुमति दें तो ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अनियन एंड इसका चैलेंज किया था, हाँ अनियन एंड टोमेटो का चैलेंज किया था कि कैसे इनकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी की जा सके। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अपेडा के भी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टार्टअप इंडिया पे होस्ट कर सकते हैं। एंड इस बार हम लोग भारत ग्रैंड चैलेंज में 75 तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कर रहे हैं। तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सटेंड एनी काइंड ऑफ हेल्प अगर उसके क्वेश्चंस को करेंगे। और बनाना में सर अभी G9 बनाना आने से पूरे इंडिया में काफ़ी चेंज आया है एंड होपफुली हमको एजुकेट करना है लोगों को कि वो G9 बनाने पे जाए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर फॉर वैल्यू एडिंग इन दिस पैनल डिस्कशन एंड योर remarks and comments have I think have generated confidence among the startups who are present here. And संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने
जो फर्दर वो कहा है कि खासतौर से जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और एग्री सेक्टर में इतने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकॉज अपीडा मोर देन 50% एक्सपोर्ट को देखता है. तो वी हैव अ लार्ज लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट which we have been struggling since last number of years. So this will be a good collaboration with the concerned organization. So as a moderator, finally, I would like to conclude what basically the important points have emerged while the discussion. I have jotted down some of the points. One, that trade intelligence and compliance are now the passport to global market, which is important, which Dr. Malik has mentioned about the importance of the intelligence. The farmer capacity and export readiness must be strengthened through the institutions and startup, which is of paramount importance. Then obviously the investors will back this journey, where the role of the esteemed panelist in today's session, Dr. Malik, will come. He will not only of himself or through his organization, but will connect with other institutions also and guide us how basically that part can be strengthened. And then Atal Incubation AIM, the innovation platforms like AIM and institutions like Indian Institute of Packaging can help scale export-oriented solutions. Then policy support and ecosystem enablers are vital to reduce startup mortality, which we have already got confidence from DPIIT. And at last, it is essential to export enable startups through targeted mentorship. And I think targeted mentorship, the first panelist, Dr. Tamanna Chaturvedi, I think such kind of mentorship can be given to the identified startups. And funding access, market intelligence, and government industry collaboration. So finally, these are the points which has emerged from the panel discussion from the esteemed panelist. So at the end, on behalf of APEDA, I would like to request, urge and invite the innovators, startups and partners to step forward to be part of this Bharati initiative, this Bharati Export Acceleration Initiative. Together, let us power India's agri-food exports towards the $50 billion milestone and make India a pioneer of the future. मुझे बहुत अच्छा लगा जो डॉक्टर मलिक ने जो किया, जय जवान, जय किसान एंड जय अनुसंधान. Thank you very much. Thank you, Secretary Sir, and thank you, esteemed panel. We have some few minutes of sessions left. I think the main reason we came here today was to start the formal process